Hello friends, my name is Tejal and today I am going to share some information regarding a queue. What is queue first of all? Queue is a linear data structure. As I told you in my last PPT that data structure is divided into basically two parts, linear and non-linear, and queue is a part of the linear data structure. It follows first in first out principle. That means जो एलिमेंट सबसे पहले आएगा वो सबसे पहले बाहर जाएगा. ठीक है. It has two pointers, front and rear. You can see in the example there is a one queue and indexing is given a of 0, a of 1, a of 2, a of 3 and a of 4. That means here total 5 elements are there, 10, 20, 30, 40 and 50. Okay. You can see from where insertion is happening and from where deletion is happening. You can see you can take from anywhere of insertion and you can do from anywhere to deletion. That means only one end for insertion data and only one end for deletion of the data. Okay. Which are the operations we can perform on the queue? Same as stack, we can perform insertion operation, deletion operation and display operation on the queue. We are starting with the insertion operation on the queue. These are the some steps regarding insertion algorithm. Step 1, if rear is equal to maximum minus 1, then right queue is overflow, go step 4 and if. उसका मतलब क्या है? यहाँ पे देखो कितने की क्यू है तुम्हारी, 5 की क्यू है बराबर. सबसे पहले डेटा कहाँ से आएगा? फ्रंट और रियर दोनों एक साथ में ही होते हैं सबसे पहले. ठीक है. जैसे जैसे तुम्हारा इंसर्शन का वैल्यू बढ़ता जाएगा तो तुम्हारा रियर पॉइंट क्या होगा? इंक्रीज होता जाएगा. ठीक है. और जब डिलीशन की बात आएगी तब फ्रंट पॉइंट इंक्रीमेंट होगा. ठीक है. तो अभी फर्स्ट एलिमेंट जहाँ पे 10 है वहां पे तुम्हारा फ्रंट भी है, वहीं पे ही तुम्हारा रियर भी है. इफ आई एम इंसर्टिंग 10 then front rear on same position. When I am inserting 20, rear pointer will be incremented by 1 on the A of A element. That means 20 value. Then after if I am inserting 30, rear pointer will be incremented again by 1. When I am inserting 40, rear pointer will be incremented by 1 and at last 50, rear pointer will be situated at the last point. Suppose if I am inserting more element, sixth element, okay, it shows me like this कि your queue is overflow. Okay. So in step 2, if front is equal to -1 and rear is equal to -1, then front rear which is equal to 0, else set rear is equal to rear plus 1. As I told you कि तुम्हारा इनिशियली जो फ्रंट -1 पे हो या रियर -1 पे हो तो क्या करो, आप फ्रंट और रियर दोनों को 0 पे सेट कर दो. नहीं तो और क्या करो, सेट रियर इज इक्वल टू रियर प्लस 1. दैट मीन्स यू इंक्रीज योर रियर एलिमेंट. एंड इफ एंड थर्ड स्टेप पे सेट क्यू ऑफ रियर विच इज इक्वल टू योर नंबर एंड एग्जिट. ओके. Here there is one example of insertion in a queue. How data are inserted? As I told you, initially F, R both are at a minus position. Whenever you insert any element, your front and rear will be 0. Okay? Initially क्या होगा? दोनों -1 होंगे. जब आप कोई वैल्यू इंसर्ट करोगे तब F और R दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 पोजिशन बराबर. और आप क्या करोगे? डेटा इंसर्ट करोगे. अभी क्या होगा कि जब जब आप वैल्यू इंसर्ट करते जाओगे रियर पॉइंटर विल बी इंक्रीमेंटेड. एज आई टोल्ड यू, योर आर विल बी इंक्रीमेंटेड बाय 1. अगेन इफ यू आर इंसर्टिंग 30 देन योर आर विल बी इंक्रीमेंटेड बाय 1 एंड सो ऑन. दिस इज द अनदर ऑपरेशन ऑफ क्यू, that is deletion algorithm. Step 1 is if front equal to -1 or front is greater than rear, write
क्यू इज अंडरफ्लो। इसका मतलब क्या है कि अभी इंसर्शन फ्रॉम वन एंड हो रहा है, डिलीशन फ्रॉम अनदर एंड हो रहा है, ठीक है। तभी आपके पांचों एलिमेंट अभी है और पांचों के पांचों एलिमेंट आपने वन बाय वन डिलीट भी कर दिए हैं, और अभी आप उसको ऐसा बोल रहे हो कि आपको एक और एलिमेंट डिलीट करना है, तो वो नहीं हो पाएगा, बिकॉज इट विल शो अस एज एन मैसेज लाइक क्यू इज अंडरफ्लो। ओके, इफ फर्स्ट कंडीशन इज true, then first write q is underflow, else we directly go into the set value which is equals to q of front, and your front will be incremented by 1, and if and exit. This is the real example of the deletion in the queue. You can see this a of 0, its value is 0. Here your front is available. When you delete your first element, your front will be incremented by 1. You can see in the next queue, your front which is equal to r which is equal to 1, at a of a, your value is only 20. Your 10 will be deleted by 1. So hope you are enjoying this session. Thank you so much.